everyone and welcome back to my YouTube channel. Since I had time, कि कौन सी चीज़ highlighter के बाद है जो सबसे important है जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है, and I realized that is contour. You guys can see मैं ready हूँ already और ignore my messy hair since so मेरे बाल अभी ऐसे ही बुरी हालत में हैं and you guys have to bear with it. But we're going to talk about contour today. This is Luscious Contour Kit. इसको पहले यूज़ किया हुआ है. हम डिटेल में बात करेंगे आज और मैंने पूरा मेकअप कर लिया है, सिर्फ कॉन्टोरिंग और हाइलाइटिंग नहीं की है, तो वो हम इस पैलेट से करेंगे. If you guys want to know how this palette works, stay tuned and let's get on with the video. This one is brand new. सबसे पहले ये एक बॉक्स में आती है which I don't know where I've put it, but बॉक्स में आती है. ये दो शेड्स में अवेलेबल है and this one is the dark one. First of all you get this face contour guide to gorgeous luscious. ये कहाँ ये कौन से पार्ट्स इसके यूज होने हैं वो बताया हुआ है. That is pretty helpful. We have this cover. One is dark contour, this one is medium one. Then we have a highlighter and illuminator. मैं इनको स्वॉच करूँगी. इससे स्टार्ट करते हैं. So this is how these look. कंटूर करेंगे using this one. मेरा angled brush है. ये इस ब्रश को मैं इसके अंदर सिर्फ 2 बार ऐसे प्रेस करूँगी. तो ऐसे प्रेस करती हूँ उसको like this on the skin and then हम इसको Let's see, it blends beautifully. Blendable product, I would say. दूसरी साइड पे भी इसको हम ब्लेंड कर लेंगे. इसको भी हम उसी तरह से इस तरह से सर्कुलर मोशन में नीचे की तरफ ब्लेंड करते जाएंगे. ओके, सो फेस की कॉन्टोरिंग हो गई है. रियली लाइट कॉन्टोरिंग. तो फॉर नोज दिस लाइट वन, और मैं ये फ्लफी सा एक ब्रश ले रही हूँ. इसमें हल्का सा Okay, so the nose contour is done. मैंने पहले से ब्लश लगाया हुआ था, उसकी वजह से it looks a little weird right now, but will highlight this area और सब balance हो जाएगा hopefully. यूज़ करती हूँ हाइलाइटिंग के लिए ये वाला हाइलाइटर. This highlighter is not bad, but इसकी ग्लो इतनी ज़्यादा नहीं. It's not working out. This is not working. Illuminator यूज़ करेंगे. Okay, this one is actually really pigmented. And that's really good. Wow, I like this one. This illuminator is illuminating. Only drawback is कि इसमें शीशा नहीं है. Like there's no mirror जिसमें देखकर आप काम कर सको. Is how this palette works. You guys can see मैंने अपने contouring के लिए ये वाला shade, nose contouring के लिए ये वाला shade और highlighting के लिए इन दोनों को mix किया है to be my new favorite illuminator slash highlighter. These colors are amazing. Of course this video is not sponsored because I'm not that famous of a YouTuber, but we'll get there. We'll get there. Let me know कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. Give it a thumbs up. You guys, this is week 3 of quarantine, but we're staying still, staying positive. Do share this video, subscribe to my channel, and see you guys next time.